Gopijana Balaba Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Vishnupada Paramahansa Privrajatashari Satar Satya Shri Srimad Srimad A.C. Bhakti Vidyapurna Swami Maharaj Sri Prabhupada Ki Iskcon founder Acharya Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Se Gaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakti Vrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Go Gop Gopinath Sham Kunda Radha Kunigiri Govardhana Ki Shri Vrindavan Dhama Ki Shri Mayapur Dhama Ki Ganga Maya Ki Jamuna Maya Ki Bhakti Devi Ki Tulasi Devi Ki Samaveta Bhakti Vrinda Ki Jainadai Gaura Premanandi. All glories to you, some of the devotees. All glories to some of the devotees. All glories to some of the devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Shri Prabhupada. This is a nose, see? Air comes out of the nose, so when you do say things like, oh, and those things, they do come in the nose. But it's not the main place of the sound. Main place is down here. See, so here, you're not going to get more sound.
So, this is the way you put a mic. Like that. Otherwise, see, when it's up here, there's also another thing. These are called eyes. And they have this funny thing is they don't see through stuff except unless it's glass or a door. So then you need to actually have a direct line of vision. So I can get you, let's see, for the sake of getting, and Bhagavan Kim Idam Jatam, and I can get something on this page. But if you put it down here, now you get the sound of the mouth, because I'm going to look here, I'm going to talk down anyway, and I can see. Science. See? Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhakti Vidyapurna Swami Maharaj ki jai. महाराज ने बताया कि ये नाक है और ये आंखें, माइक में जब हम बोलते हैं तो मुंह के माध्यम से बोलते हैं, नाक से आंखों से नहीं बोलते। तो माइक अगर इधर पे रहेगा तो सांस लेने में कष्ट हो सकता है, ऊपर रहेगा तो देखने में कष्ट हो सकता है। तो नीचे इस तरह से अगर माइक सेट होता है तो वो देख के पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं और कहीं भी देखने में व्यवधान नहीं होगा। महाराज ने उपदेश दिए। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavan Kim Idam Jatam Karma Vo Brahma Vadinam Viparyayam Aho Kashtam Maivam Syad Brahma Vikriya Bhagavan Kim Idam Jatam Karma Vo Brahma Vadinam Viparyayam Aho Kashtam Maivam Syad Brahma Vikriya Bhagavan Kim Idam Jatam Karma Vo Brahma Vadinam Viparyayam Aho Kashtam Maivam Syad Brahma Vikriya Bhagavan Kim Idam Jatam Karma Vo Brahma Vadinam Viparyayam Aho Kashtam Maivam Syad Brahma Vikriya
शब्दार्थ भगवान, कृपया मेरे पीछे दोहराइए। भगवान, हे प्रभु, ये इदम, यह क्या है? जातम, उत्पन्न हुआ, कर्म, सकाम कर्म, वह, हम सभी, ब्रह्मवादिना, वैदिक मंत्रों के उच्चारण में पटु, आप लोगों का, विपर्ययम, विचलन, अहो, ओह, कष्टम, कष्टप्रद, माँ एवं स्यात्, इस तरह नहीं होना चाहिए था। ब्रह्म विक्रिया, वेद मंत्रों का यह विपरीत प्रभाव। अनुवाद, हे प्रभु, आप लोग वैदिक मंत्रों के उच्चारण में पटु हैं, तो फिर वांछित फल से विपरीत फल क्यों निकला? यही पश्चाताप का विषय है। वैदिक मंत्रों का ऐसा उल्टा प्रभाव नहीं होना चाहिए। तात्पर्य, इस युग में यज्ञ करना मना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण नहीं कर सकता। यदि वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण किया जाए तो जिस इच्छा से यज्ञ किया जाता है उसकी पूर्ति अवश्य होती है। इसीलिए हरे कृष्ण उच्चारण महामंत्र कहलाता है, जो अन्य समस्त वैदिक मंत्रों से बढ़ चढ़कर है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण मात्र से अनेक लाभ होते हैं, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महालाभाग्य निवारणम श्रेयः भैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदानुभूतिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो, जो वर्षों से हृदय में जमी धूल को स्वच्छ करता है और बार बार जन्म मरण के बद्ध जीवन की अग्नि को शमन करता है। यह संकीर्तन आंदोलन मानवता के लिए मूल वरदान है, क्योंकि यह वरदान रूपी चंद्रमा की किरणों को बिखेरता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान का जीवन है। यह दिव्य आनंद के सागर को बढ़ाता है और हमें उस अमृत को चखने में समर्थ बनाता है, जिसके लिए हम सभी सदैव प्रणायित रहते हैं। अतः हमें जिस सर्वश्रेष्ठ यज्ञ को संपन्न करना है वह है संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसा। जो लोग बुद्धिमान हैं वे इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन करके महानतम यज्ञ का लाभ उठाते हैं। जब हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कई लोग मिलकर करते हैं तो यह संकीर्तन कहलाता है। ऐसे यज्ञ के प्रभाव से आकाश में बादल आ जाएंगे। यज्ञात भक्ति वर्जन्य। दुर्भिक्ष के इन दिनों में मात्र हरे कृष्ण यज्ञ की विधि से लोग वर्षा तथा अन्न के अभाव से छुटकारा पा सकते हैं। निसंदेह इससे सारे मानव समाज को राहत मिल सकती है। अधुना सारे यूरोप तथा अमेरिका में दुर्भिक्ष है और लोग कष्ट उठा रहे हैं, किंतु यदि लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को गंभीरता पूर्वक ग्रहण करें, यदि वे अपने पाप कर्म बंद कर दें और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें, तो उनकी सारी समस्याएं आसानी से सुलझ जाएं। यज्ञ की अन्य विधियों में तरह तरह की कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि ना तो ऐसे पंडित हैं जो मंत्रों का ठीक से उच्चारण कर सके, ना ही यज्ञ संपन्न करने की सामग्री प्राप्त कर पाना संभव है। चूंकि मानव समाज दरिद्र है और लोग वैदिक ज्ञान एवं वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने की शक्ति से वंचित हैं, अतः हरे कृष्ण महामंत्र ही एकमात्र
एकमात्र आश्रय है। लोगों को इसका कीर्तन करने की बुद्धिमानी बरतनी चाहिए। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती की सुमेध सार। जिनके मस्तिष्क कुंद है वे ना तो इस कीर्तन को समझ सकते हैं ना ही इसे ग्रहण कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की। When you're dealing on the material platform, you need material excellence. जब आप भौतिक स्तर पर कार्य करते हैं तो भौतिक उत्कृष्टता की आवश्यकता होती है। Without that, it doesn't work. उसके बिना कार्य नहीं होगा। Because you're dependent on the mechanics of it. क्योंकि आप उसके जो भौतिक विज्ञान है उस पर निर्भर हैं। Right. So you exactly work with the material energy in a particular way, then you'll get that particular result. जब आप भौतिक शक्ति से एक तरह से व्यवहार करते हैं तो उस तरह के परिणाम आप प्राप्त कर रहे हैं। And if you're not so well aware and conscious in that, you'll get a different result. और अगर आप इतने ज़्यादा जागरूक नहीं हैं उसके बारे में तो आपको दूसरा परिणाम प्राप्त होगा। So in the within the Vedic context, then they'll explain what's the situation of the material world, what is the relationship between all the different entities or objects within the world. तो वैदिक परिप्रेक्ष्य में संसार में अलग-अलग जो इकाइयां हैं, अलग-अलग वस्तुएं हैं, उनके बीच में संबंध के बारे में जानकारी दी गई है। Then it will explain what is the activities that you can perform with those different objects. और उसके बाद ये समझाया गया है कि उन अलग-अलग वस्तुओं के साथ में आप क्या-क्या कार्य कर सकते हैं। What's the specific relationship, the working relationship. तो जो विशिष्ट कार्य संबंधी संबंध है अलग-अलग वस्तुओं के बीच में। What's the proper attitude that you have to have in applying those things? और ये सारे वस्तुओं को उपयोग करते समय किस तरह का ठीक मनोभाव आपको रखना चाहिए। And then what's the direction that this is being, where is the direction that this action is being, how do you say, directed towards? और ये जो आपका कार्य है किस दिशा में आपको लेकर के जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। Then you're going to have what is the particular experience you can gain from that result. और उसके बाद आता है कि उस परिणाम से आप किस तरह का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। Does that make sense? All that together then defines how the energy transforms. और यही सब मिलकर के ये परिभाषित करता है कि ऊर्जा जो है, शक्ति जो है, उसका परिवर्तन किस तरह से होता है, एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलती है। Because it's Krishna's energy. क्योंकि ये कृष्ण की शक्ति है। You work with Krishna's energy according to what Krishna says. आप कृष्ण की शक्ति के साथ व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं कृष्ण के आदेश के अनुसार, जैसा कृष्ण कहते हैं उस अनुसार। You can't work in your own way how you feel or how your friends feel or how a group of you get together. No, it should be like this. आप इस तरह से कार्य नहीं कर सकते जैसे कि आपको लगता है या आपके मित्रों को लगता है या आपका एक समूह एक साथ इकट्ठा होता है और महसूस करता है कि ऐसे होना चाहिए, इस तरह से चीजें होती हैं। Right. We can do those things, but it won't work. हम ऐसा कर सकते हैं पर इससे परिणाम प्राप्त नहीं होगा, ये कार्य नहीं करेगा। It's Krishna's world. It will work the way Krishna says it'll work, not how so many people together say it will work. ये कृष्ण का संसार है और जिस तरह से कृष्ण कहते हैं, चाहते हैं, उसी तरह से कार्य करेगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग कुछ कहते हैं तो उस तरह से कार्य करेगा। So you have to have people who are very expert in these things if you want to get the result. तो अगर आपको परिणाम चाहिए हैं, वांछित परिणाम चाहिए, तो आपको ऐसे लोग होना चाहिए जो इन चीजों में बहुत पटु हैं। So now of this, what's going to define is going to be you guys really like echo.
Hello, over there with the little knobs. This reverb is really good. So much echo is really good, or what? इको बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये You know, you have to make it balanced. You see, where does the balance come? You don't go by when you're out on the road and there's that big, huge truck and the whole thing is just speakers blasting away. Don't use that as a standard of what is normal. You're using Western equipment. In the West, they balance it. It's not how loud you can get it. It's how you can get it where there's no echo, it doesn't bounce around. Because as it echoes, no one can pay attention. Everyone will be distracted and will be thinking about breakfast or what else they're going to do during the day. Like that. I remember as a kid going to math class, calculus. It was my favorite class because the room had so much echo that you couldn't hear or pay attention to anything, and I just stare out the window and think of all kinds of things, and I do that for the whole period, and it was great. That was my favorite class. So if that's the effect you want, go for it. But if you want people to actually hear, it just should be enough they can hear, not that it bounces off the wall 10 times. You know, we're not talking about, you know, when Krakatoa exploded, that the waves in the ocean went around the world 7 times, and so that's the standard. Yes, let's do that. Yeah? That's why the knobs have so many settings, so you can actually get the right one. Otherwise, you just take them all, push them all the way to the top, and sit back and relax. Does that make sense? इसको बैलेंस करना ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर आप साउंड करेंगे तो उससे सभी बात को ध्यान नहीं दे पाएंगे। महाराज ने बताया कि ये एक पाश्चात्य उपकरण है और आपको उसमें जो नियम है उसके हिसाब से उसको कार्यान्वित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बाहर ट्रक एक होता है जिसमें बहुत सारे स्पीकर, बहुत सारे साउंड लगे होते हैं और वो पूरी आवाज़ में उसको चला देते हैं। अगर वो स्टैंडर्ड है तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और महाराज जब बाल्यकाल अवस्था में थे तो उस समय पे एक कैलकुलस की क्लास होती थी। महाराज को वो वाली क्लास सबसे अच्छी लगती थी क्योंकि उस क्लास में इको बहुत ज़्यादा होता था। उसके कारण से कुछ समझ में नहीं आता था वो क्या बता रहे हैं, तो महाराज खिड़की से देखते रहते थे और दिन भर की योजनाएं बनाते रहते थे क्या करना है। तो अगर आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, यहाँ पे क्लास में नहीं सुनना है, ब्रेकफास्ट में क्या होगा, दिन में क्या करना है, वो सब प्लानिंग करनी है, तो फिर आप बहुत इसको बढ़ा दीजिए पूरा लास्ट तक लेके, और बहुत इको होगा, 7 बार आवाज़ पूरा घूमेगी। You want to bring it, once you get the echo, that's too much, then you bring it just down a little bit. It should be that it just sounds like I'm talking a little bit louder. That's proper sound. Does that make sense? बस ऐसा लगना चाहिए कि महाराज थोड़ा सा जोर से बोल रहे हैं। Yeah? Yeah, it shouldn't echo. Otherwise you've gone too far. Yeah, that's my point. His is good, but mine's echoing, so that's too much. But somehow or another, they like too much. Kind of like, it's like chili, you know, you put more than you need, you know, then so nice. Okay, so then, so we see here is that the Vedic mantras can be used in a wide range of activities. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वैदिक मंत्र जो हैं वो बहुत विभिन्न प्रकार के कार्यों में उपयोग उनका किया जा सकता है। So you have the how you say the daily activities, the occasional activities, and that for one's particular material desire. तो आपके कुछ दैनिक कार्य होते हैं, कुछ शाश्वत कार्य होते हैं, और कुछ एक विशेष इच्छा को पूरे करने वाले कार्य होते हैं। Okay. So, and then you have what the ultimate result do you want from that? Are you interested in going to the heavenly planets? You want liberation, or do you want devotion? और उसके बाद में अंतिम लक्ष्य आपका क्या है इसके माध्यम से? क्या आप स्वर्ग लोकों में जाना चाहते हैं, आप भक्ति चाहते हैं, कि आप मुक्ति चाहते हैं?
So we see that the mechanics of the process is actually secondary to what is the intent. तो जो क्रिया है उसकी जो पद्धति है और उसका जो उद्देश्य है, जो पद्धति है वो द्वयम दर्जे की है, उसका महत्व कम है, गौण है, और जो उद्देश्य है वो मुख्य है. Right? So, therefore, then, Prabhupada's pointing out is that you want to get a full result. तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर आपको पूर्ण परिणाम चाहिए, and you don't have people that through the Vedic mantras they can actually mechanically get it done. और आपके पास ऐसे योग्य व्यक्ति नहीं है जो ये वैदिक मंत्रों के माध्यम से इस क्रिया का पालन करके उसको कर सकते हैं. Means in the whole performance of a yajna, one syllable is wrong, you won't get the result. In the whole performance of yajna, one Syllable. तो पूरे यज्ञ की पद्धति में अगर एक शब्द का उच्चारण भी गलत हो जाता है तो फिर आपको उसका परिणाम नहीं मिलेगा. Right. So it's like when you're dealing with a mathematical equation. जैसे गणित की कोई अगर सूत्र होता है, that if one calculation in a multiple calculations is wrong, the whole thing will be wrong. तो बहुत सारे आप जो कैलकुलेशन गणना करते हैं उसमें अगर एक जगह पे भी गलती हो जाती है तो पूरा गलत हो जाएगा. Right? You can't say, oh, it's only one calculation, I'm doing this big algebraic thing. One of them was wrong, but, hey, I'm working hard. I really want it to be nice. It should come out right. No, it won't. तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, मैं अच्छे से करना चाहता हूँ और उतने पूरे में बस एक ही जगह पे गलत है तो ऐसा नहीं चल जाएगा, इस तरह से नहीं होगा. Like that. So in the same way, on the material platform, then when you're performing these yajnas, then one syllable is wrong, the whole yajna is wrong. भौतिक स्तर पे जब आप ये यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं तो एक उच्चारण भी अगर गलत हो जाता है तो पूरा यज्ञ गलत हो जाता है. Right? So that's why then it's pointing out who has that kind of ability. इसलिए यहाँ पे बताया गया किसके पास इस तरह की योग्यता है. Right? So then Prabhupada's pointing out is that here Manu's having a problem with this. तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पे मनु को इससे समस्या है. Let alone us in Kali Yuga. तो छोड़ दीजिए कलयुग में हमारे जैसे लोगों को. Right? Because the first thing of symptom of knowledge, or the most important thing of knowledge, is humility. ज्ञान का जो लक्षण है, सबसे पहला लक्षण वो ये है विनम्रता. But in general, if you think about those who are expert in chanting the Vedic mantras and doing yajnas and all these different things that you see around India, humility is not one of the qualities that springs to mind when you think of these pundits. तो आप देखते हैं भारत में बहुत सारे ऐसे पंडित हैं जो बहुत दक्ष हैं इस तरह के यज्ञ के मंत्रों का उच्चारण करने में, तो उनको देख करके सबसे पहले आपके मन में कम से कम विनम्रता तो नहीं दिखेगी उनके अंदर. Right? Same. Someone's very rich, you don't think humble, or someone's very powerful in the government, or you don't think humble. जब आप देखते हैं कोई बहुत धनी होता है या सरकार में बहुत बड़ी पदवी पे होता है तो वो विनम्र नहीं होता. So that means how much knowledge do they have? इससे पता चलता है कि वास्तव में कितना ज्ञान उनके पास है. Right? You know some of the mechanical points of something, that doesn't mean you actually know what it's for. आपको अगर केवल किसी वस्तु की विधि के कुछ अगर आपको कुछ बिंदु पता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको ज्ञान है उसके बारे में. Right? So what something's for ultimately is for pleasing Krishna. So pleasing Krishna, that gets the actual result of the Vedic mantras. So the Vedic mantras require someone to be initiated into them to be able to chant properly.
तो वैदिक मंत्रों के लिए प्रावधान है कि व्यक्ति को ठीक तरह से दीक्षित होना चाहिए, उनको ठीक तरह से उच्चारण करने के लिए। And that means you have to have the material qualifications. उसके लिए आपको भौतिक योग्यताएं अवश्य भावी है। Right? But in this age, who has the qualifications? In this age, who has the qualifications? इस युग में किसके पास उस तरह की योग्यताएं हैं? But the Hare Krishna Maha Mantra is so great, it doesn't require any material qualification to chant. पर हरे कृष्ण महामंत्र इतना महान है, इसका जप कीर्तन करने में किसी भी तरह की योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं। It's unique of mantras. ये सभी मंत्रों में अद्वितीय है। All other mantras come from the Hare Krishna Maha Mantra, so that's why it's the Maha Mantra. सारे के सारे मंत्र जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र से ही आते हैं और इसलिए ये महामंत्र है। Right? You don't say the Maha Purusha Shukta. तो आप महापुरुष सूक्त नहीं उच्चारण करते। No, it's Maha Mantra. ये महामंत्र है। Right? Does that make sense? So, therefore, by chanting the Maha Mantra, you actually get the results that you can't get by Vedic sacrifice. महामंत्र के माध्यम से आप वो परिणाम प्राप्त करते हैं जो वैदिक यज्ञों के माध्यम से आप नहीं कर सकते। Right? By chanting, then you can, as Lord Chaitanya points out, it cleanses the heart of all the material contamination. जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ बताते हैं कि ये महामंत्र का जप एवं कीर्तन करने से हमारे हृदय का सारा कल्मश दूर हो जाता है। And it extinguishes the fire of conditional life. That means there's no more interest in material nature. ये बद्ध जीवन की जो दावाग्नि है उसको भी बुझा देता है। इसका अर्थ है कि भौतिक प्रकृति में किसी का कोई रुचि नहीं रह जाती। Right? We'll think, oh yes, I have so many, so much sin in my heart and so much material desire. Please, Krishna, remove all this sin from my heart. तो कोई ऐसा कह सकता है कि मेरे हृदय में बहुत ज़्यादा पाप है, बहुत ज़्यादा भौतिक बाधाएं हैं। हे भगवान, आप कृपया इनको मेरे हृदय से निकाल दीजिए। Right? So we're worried about getting rid of the sin. We are interested in getting rid of sin and the reactions. इसका अर्थ है कि हम जो है वो पाप और उसके जो परिणाम है उससे मुक्त होने में हमारी रुचि है। But who's praying get rid of the pious or the punya also? कौन ऐसा जो प्रार्थना कर रहा है पुण्य कर्म के फलों से मुक्त होने के लिए? Because punya, that's what creates material desire. क्योंकि पुण्य ही है जो भौतिक इच्छाएं उत्पन्न करता है। You have facility, you want to enjoy it. अगर आपके पास सुविधा है तो आप उसका भोग करना चाहते हैं। Can you enjoy money if you don't have it? क्या आप धन का भोग कर सकते हैं अगर आपके पास धन नहीं है? Right? You have to have money, then you can enjoy money. तो आपके पास धन पहले होना चाहिए, तब आप धन का भोग कर सकते हैं। So where does the money come from? तो धन कहाँ से आता है? I mean, of course, you can try looking on trees or something. तो आप पेड़ों पे ढूंढ सकते हैं। But so far, not so much. पर ज़्यादा संभावना नहीं है। Right? So that means it comes because of piety. तो ये आता है पुण्य के माध्यम से। You understand? So it says a material conditioned life. That means pious or impious. तो भौतिक अवस्था का अर्थ है पुण्य और पाप दोनों ही उसमें। King Indra, you don't get much more pious than that. राजा इंद्र जो है उनसे ज़्यादा पुण्यात्मा आपको नहीं प्राप्त होगा। But he doesn't make some foolish mistakes. पर फिर वो भी बहुत सारी गलतियां करते हैं जो कि समझदारी से भरा हुआ नहीं होता। He's got 1,000 eyes on his body. उनकी बहुत सारी आंखें हैं शरीर Right? में। And they're not tattoos. और ये टैटू नहीं है, वास्तविक आंखें हैं। They actually open, close, blink, वो खुलती हैं, बंद होती हैं। You wouldn't want to see him when he's sad. You would not want to see him when he's sad or unhappy. आप जब दुखी है तो देखना नहीं चाहते। Yeah, because then जब दुखी है, आप जब दुखी है तो देखना चाहते हैं क्या? somebody with 2 eyes is crying is so bad. 1,000 eyes crying, that's a problem. दो आंखों से रोते हैं तो कितना खराब है। हजारों आंखों से कोई रोएगा तो और कितना ज्यादा खराब। Right? So he makes so many mistakes.
Govardhan Leela, he ends up, hiding in a lotus stem, all kinds of stuff going on. And he's pious. तो इंद्र बहुत सारी गलतियां करते हैं। गोवर्धन लीला आप जानते हैं, और वो कमल की नाल में छुपना पड़ता है उनको, तो उसके बाद भी वो पुण्यात्मा है। Right? And so we're thinking, oh, if we get rid of all this sin in our heart, then we'll be happy. तो हम सोचते हैं कि ये पाप अगर हमारे हृदय से निकल जाए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। But he's Mr. Pious, and he's still making problems. तो वो पुण्यात्मा है, लेकिन उसके बाद भी वो प्रसन्न नहीं है। Right? So that means you have to get rid of material desire. इसका अर्थ है कि आपको भौतिक वासना से मुक्त होना पड़ेगा। So you're only interested in serving Krishna. ताकि आप केवल कृष्ण की सेवा करने में रुचि रखते हैं। Does that make sense? You only want to serve Krishna. आप केवल कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। Then whatever that entails, that you do, but the result is for Krishna. जो भी फिर उसकी डिटेल्स हैं, जो भी और चीजें हैं, वो तो रहेंगी, आप करेंगे, पर लेकिन आप केवल कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। Then you can do nice things for Krishna, you can have all kinds of knowledge and skills, but it's about pleasing Krishna. फिर आप कृष्ण के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हैं, आप बहुत ज्ञान हो सकता है, आपके अंदर बहुत दक्षता हो सकती है, पर लेकिन उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करने। So therefore there's no material reaction. उसका कोई भी भौतिक फल प्राप्त नहीं होता। That's what we're looking for. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Right? Does that make sense? और यही So, हम चाहते हैं। and then it says prime benediction, because whatever you're looking for, you get from this, from the Sankirtan movement, not from something else. जो भी आपको चाहिए है वो आपको इस संकीर्तन आंदोलन से मिल जाएगा। इसलिए ये परम आशीर्वाद है भगवान का, और किसी पद्धति के माध्यम से नहीं मिलेगा। Right? And then we're looking for happiness. That comes from the holy name. हम सुख ढूंढ रहे हैं, तो ये हरि नाम से प्राप्त होगा, पवित्र भगवान नाम से प्राप्त होगा। Right? Here's a person who is the Lord of mankind. यहाँ पे व्यक्ति है जो कि मानव जाति के स्वामी है। Right? So all human beings, he's the boss. जितने भी मानव है, मनुष्य हैं, उन सभी का स्वामी है। Right? So good position, तो अच्छी खासी पदवी है, but still unhappy. तो फिर भी सुखी नहीं है। Does that make sense? So we have to see that it's only when you give up material desire and only do things because it's pleasing to Krishna, that then makes us actually satisfied. इससे हमको पता चलता है कि आप भौतिक वासनाओं को छोड़ करके केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, उससे हम संतुष्ट होते हैं वास्तव में। And as a side effect, then naturally all the material things happen. और इसका एक साइड इफेक्ट, मतलब साथ में एक और परिणाम भी प्राप्त होता है। Right? The side effect is Material facilities. भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। Right? You're sitting on what? आप किस पे बैठे हुए हैं अभी? A marble floor. मार्बल के फर्श पर। How many of you here at your house, the normal thing is marble floor? आप में से किन के घर में नॉर्मल स्थिति जो है वो मार्बल के फर्श है? Okay, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5। Okay. So you understand? And if you filled this hall up, there might be another handful. पूरा हॉल अगर भर भी देंगे लोगों से पूरे कक्ष में, तो कुछ और हाथ उठेंगे बस। Right? We don't think marble floor is a luxury. It's just standard in the temple. पर मंदिर में हम सोचते हैं मार्बल का फर्श कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये तो एक मानक स्तर है, होना ही चाहिए। So the number of people where a marble floor is just normal. Of course it's marble. You wouldn't have something else. It's not that it's luxurious. It's just normal. हमारे लिए सामान्य है, ये कोई बहुत विशेष कुछ नहीं है। Right? But now all of you are sitting on this floor. अभी आप सभी मार्बल के फर्श पे बैठे हुए हैं। Right? More people come in, they'll also sit on this floor. और लोग आएंगे तो वो लोग भी मार्बल के फर्श पे बैठेंगे आगे। Then the chanting's not working.
Right? The last 2 years during COVID, anybody's been starving? 2 साल अभी ये महामारी थी, क्या कोई ऐसा है जो भूखमरी का शिकार है? अच्छा खाना अच्छा खाना मिल रहा है। Yeah. But what's in the news? पर खबर में क्या आ रहा है? Oh, shortage of food, this, that, so many things. We're doing fine. भोजन की कमी है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें हैं, पर फिर भी हम अच्छे से हैं। Right? Our focus is on chanting and pleasing Krishna. हमारा जो ध्यान है वो कीर्तन करने में, भगवान को प्रसन्न करने में। But materially, then these things come on the side. तो भौतिक चीजें जो है वो अपने आप आ जाती हैं। Does that make sense? When they bring the meal, it comes with a plate. जब भोजन लेकर के आते हैं तो प्लेट साथ में आती है अभी। Right? Someone invites you for lunch, come to my house for lunch. Okay, nice. Will you give me a plate also? I'm really hungry today, and if I just put it in my hands, I don't think I'll get enough, you know. So, will I get a plate? आप ऐसा बोलते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे लग रहा है हाथ में मैं उतना नहीं ले पाऊंगा, आप प्लेट में देंगे क्या? Right? No, it comes with it. So in the same way, you chant Hare Krishna, the material things come along with it. तो अपने आप ही साथ में आती है। इसी तरह से आप हरे कृष्ण का जप करते हैं तो भौतिक चीजें अपने आप साथ में आएंगी। But if you think, oh, I'll chant and I'll get these material things, you won't. पर आप सोचें कि मैं जप करूंगा उससे मुझे भौतिक चीजें प्राप्त होंगी, तो ऐसा नहीं होगा। Right? That's the way energy works. इस तरह से भगवान की शक्ति कार्य करती है। You look at it, it moves. That's the way energy works. You look at it, it moves. No? जब हम शक्ति की तरफ देखते हैं तो वो काम करते हैं। चलिए काम करती है। That makes sense? So it's paying attention to Krishna, the energies are with Krishna. But if you focus on the energies, they'll leave. जब आप कृष्ण की तरफ आपका ध्यान होता है तो शक्तियां कृष्ण के साथ में हैं, पर आपका ध्यान अगर शक्ति की तरफ रहेगा तो वो चली जाएगी। You worship Krishna, then Lakshmi is there. You worship Lakshmi on her own, she's known as Chanchala, right? She goes. अगर आप कृष्ण की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी तो उनकी पत्नी है, तो उनके साथ में रहेंगे। पर लेकिन अगर लक्ष्मी की अकेले पूजा करेंगे तो वो चंचला कहलाती है, तो वो चली जाएगी। Right? So you don't have to worry about it. आपको उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। Right? And then the last point Prabhupada makes is that those whose brains are dull cannot understand this chanting, nor can they take to it. आखिरी बात प्रभुपाद जो इसमें तात्पर्य बताते हैं वो ये है कि जो मंद बुद्धि लोग हैं वो ये जप की कीर्तन की जो प्रक्रिया है ना इसको समझ पाएंगे ना इसको ग्रहण करेंगे। Right? We try our best how to serve Krishna, make things nice, make it attractive for people. हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कैसे कृष्ण की सेवा करनी है, कैसे सब कुछ बहुत अच्छे से करना है ताकि लोग इससे आकर्षित हों। And then it'll all work nicely. And those people who can't take it up, that's because, what's the Prabhupada uses, their brains are dull. पर कुछ लोग फिर भी उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद बताते हैं उसका कारण ये है कि वो मंद बुद्धि है। Right? We have to understand that. हमें समझना पड़ेगा। People don't come to Krishna conscious because their brain is dull. तो वो लोग कृष्ण भक्ति में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वो मंद बुद्धि हैं। So we try to make it as available and as attractive as possible. तो हमें अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए कि जितना भी ज़्यादा इसको सुलभ बना सके और जितना ज़्यादा आकर्षक बना सके जितना भी संभव हो। But we don't change anything because, oh, these dull heads, because they don't like it. They don't like anything. पर हमें इसको परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है इस कारण से कि ये जो मंद बुद्धि लोग हैं ये इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। वो वैसे भी कुछ पसंद नहीं करते हैं। Don't worry. If they were satisfied, they would go out, get something, and then wear that and be happy. No, but after 2 weeks they have to buy something else and something else. They got a closet full of stuff. तो इसके बारे में आप चिंता मत कीजिए। अगर वो लोग खुश होते तो वो लोग
जाते हैं, कुछ लेके आते हैं और खुश होते हैं, पर लेकिन वो जाते हैं, कुछ लाते हैं, फिर 2 सप्ताह बाद कुछ और लेके आते हैं, अलमारी भर के बहुत सारा सामान उनके पास है, पर वो खुश नहीं है. So don't fall into the trap as, oh, they're not interested, so we have to change Krishna consciousness. तो इसलिए इस जाल में मत फंसिए कि वो लोग रुचि नहीं ले रहे हैं, तो हमको कृष्ण भावनामृत को बदलना पड़ेगा. No, Krishna consciousness stays the way it is. You find intelligent ways to get it out to the people, but you don't change it. कृष्ण भावनामृत जैसा है वैसे ही रहेगा. आपको ऐसे तरीके ढूंढने हैं कि जिस तरह से वो है उसको किस तरह से लोगों को सुलभ बनाए ताकि वो लोग उसमें रुचि लें. The name is already perfect. भगवान का नाम जो है वो पहले ही पूर्ण है. Bhakti is perfect. भक्ति पूर्ण है. We may have to improve the quality of our understanding and practice. तो हमें अपनी जो समझ है और अपना जो अभ्यास है उसकी गुणवत्ता को हो सकता है बढ़ाना पड़ेगा. But don't use the thing, oh, it's changing, things are different, oh, you can't do it in the same way. Of course you can. पर इस तरह से इस बात को उपयोग मत कीजिए कि वो बदल रहा है, अभी चीजें सब बदल रही हैं तो इसलिए हमको बदलना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं. You have a chapati. Here you call them chapatis? Yeah, okay. आपके पास एक चपाती है. Okay? You take it, right? Grab chapati. And you grab one part is pulling, one part is pushing. Right? Yeah? चपाती जो होती है, You want to take a piece. You grab, you push, you pull one piece and it rips. Doesn't make sense? You only eat rice. Okay. So, चपाती खींचने एक बार खींचना पड़ेगा नहीं. हाँ, उसमें चपाती जो है उसको तोड़ने के लिए उसको खींचना भी पड़ता है और yeah, but you can do it with one hand. आप एक हाथ से कर सकते हैं. एक हाथ से चपाती खींच सकते हैं. एक बार खींचना पड़ेगा ऐसा करना, तभी तो चपाती अलग कर सकते हैं. You have to do with 2 hands, Maharaj. No, with one hand. Maharaj, You don't eat chapatis. Yes, I eat. But you use 2 hands. Take it, rip it like this. एक हाथ से. मामूली में एक हाथ एक करते और हाँ, खींचने में तो अलग So करना. he's saying with same hand. Yes, exactly. Okay. Yes. See, this is by association and learning. By sadhu sangha, all things become revealed. Okay. So you do like that, yes? एक हाथ से हम लोग चपाती को खींचते भी हैं और धक्का भी देते हैं, तोड़ते हैं. What about your father? आपके पिताजी वो क्या करते हैं? Same? एक ही. Okay. What about your grandfather आपके दादाजी, and his grandfather? उनके दादाजी. What if we go back all the way? Well, you know, you're in a particular gotra, and it goes all the way back to the Prajapatis, the 21 Prajapatis. How do they eat their chapati? और आप पूरा ऊपर तक जाएंगे जो प्रजापति लोग हैं वो कैसे चपाती खाते हैं? Right? Same. वैसे ही. So that means for 151 trillion years, इसका मतलब है कि they've been ripping the chapati the same way. तो करोड़ों करोड़ों सालों में वो चपाती तोड़ने का तरीका वही है. Right? So what is all this talk? Oh, it's all different. Nothing's the same. You can't do it the same anymore. That's just for people with dull brains. They can't see what's going on. तो जब हम ऐसी बातें करते हैं कि नहीं अभी सब बदल गया है, अब चीजें वैसी नहीं रही हैं, इसका मतलब है कि ये हमारी मंद बुद्धि है कि क्या चल रहा है हम ये देख नहीं पा रहे हैं ठीक तरह से. Right? The kartals are here. ये करताल इधर पे है. Too far. दो हिस्से हैं. I can't play kartals. मैं करताल नहीं बजा सकता. It's all different. वो अलग हो गया. Always the kartals have been over here. I could just reach, grab, and play. But now they're over here. It's different. Oh, it's everything's changed. It's not the same. Oh, it's Kali Yuga. I can't do anything. You know, all I can do is go home and hopefully mom will cook me some chapatis. तो करताल बहुत दूर है, मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा तो मैं नहीं बजा सकता. अभी कलयुग है, सब बदल गया है, बहुत परिवर्तन हो गया है, छोड़ देते हैं, नहीं होगा. And it still doesn't work properly. See, why does my mom keep telling me to go out and get a job? Why does my mother, even at home it's not perfect because my mother keeps telling me to go out and get some work, तो घर भी जाएंगे तो वहाँ make money.
ठीक नहीं है, क्योंकि माँ हमेशा बोलती रहती है कि बाहर जाओ, नौकरी ढूंढो, पैसा कमाओ. Right? Kids don't play nowadays. All the little kids, no. 3 years old, they're all sitting down and studying, quantum physics, right? आजकल के बच्चे जो है वो खेलते नहीं हैं. क्या वो 3 साल के बच्चे बैठ करके सब बोलते हैं ठीक है चलो बैठते हैं अभी हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं, ऐसा होता है क्या? And we heard in Japan at 2 they're doing that, right? हम सुन रहे हैं कि जापान में 2 साल की उम्र से चालू कर रहे हैं. Right? Dogs don't bark anymore. कुत्ते अभी भौंकते नहीं हैं. They don't wag their tail. वो पूंछ हिलाते नहीं हैं. Rain doesn't come out of the sky. बारिश अभी आकाश से नहीं आती है. The air doesn't blow and we call it wind. हवा बहती नहीं है, उसको हम पवन बोलते नहीं हैं. Trees don't grow out of the ground. पेड़ जमीन से नहीं उग रहे हैं. You want to go somewhere, you get in a vehicle. आप अगर कहीं जाते हैं तो आप एक वाहन के ऊपर बैठ कर. You want to eat, you put things in your mouth. जब आपको खाना होता है तो आप मुंह में डालते हैं. You want to sleep, you lay down. जब आपको सोना होता है तो आप लेट जाते हैं. Right? Everything's changed, right? There's nothing the same as before. पहले जैसा नहीं है. So we have to understand, it always is the same. Some detail is different, but it's always the same. तो हमें समझना पड़ेगा कि सब कुछ हमेशा ही एक जैसा रहता है, बस कुछ उसके जो विवरण है, जो डिटेल है, वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है. It just makes some minor details. तो थोड़ा सा बस विवरण है, उसमें परिवर्तन हो सकता है. The pants get skinnier, so it takes you 10 minutes to put them on. The pants get thinner, so then it takes you 10 minutes to put them on. तो पैंट और संकीर्ण होते जा रहे हैं, 10 मिनट लग जाता है उसको पहनने में. And they become so short your underwear stick out. और इतने छोटे हो रहे हैं कि अंडरवियर नीचे से दिखाई देती है. Right? And then nowadays, I was looking around as I was coming, like that, because I've been in Maya for a while, so I haven't been out. And so seeing Bombay, the pants are starting to get bigger again. फिर मैंने देखा कुछ समय बाद नया फैशन हुआ, पैंट फिर से चौड़े होने शुरू हो गए. Yeah. So it's just like that. It gets bigger. And then they keep getting too big, and then they start getting smaller again. And then they go big again, and then they go small again. That's just what it does. वो और ज़्यादा चौड़े होते जाते हैं, फिर धीरे-धीरे फिर संकीर्ण होते हैं, फिर और चौड़े होते हैं. Right? They go up, they go down, they come up to your navel, and then they go down to, like this, up like this. लोग ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं. Right? परिवर्तन होता है. The bottom gets longer and gets shorter, longer, shorter. और उसका जो नीचे का सिरा है वो छोटा होता जाता है, फिर बड़ा होता जाता है. Cuffs come and go. Cuffs. कफ. You know cuff? लगाने का जो Cuff? कफ. The pant comes down and there's a little bit that folds back. वो नीचे जो पैंट को नीचे से मोड़ते हैं थोड़ा सा, वो आता है जाता है. Yes? No? Yeah, that's called a cuff. So sometimes cuffs are there or not, and then at the top you have those pleats, those folds or not. It's flat or it's got pleats. कुछ No? pleats वगैरह होती है, कभी रहती है, कभी नहीं रहती है, ऐसे बदलता है. Okay? It just keeps revolving around. It just keeps moving. That's all. वो बस गोल-गोल घूमता रहता है, चलता रहता है. And we'll say, oh, it's new, it's different, no, it's the same old thing. तो हम बोलते नहीं ये बदल गया है, ये नया है, पर वास्तव में वही पुरानी चीज है. Right? And now it's not so much, but a couple of years back there was the fashion with the shorts, that were just below the knee, and everybody was wearing them. तो मैं देखा था कुछ सालों पहले एक फैशन था शॉर्ट्स पहनने का, जो कि जस्ट थोड़ा सा घुटने के नीचे तक आता है. सब लोग वैसे ही, ज्यादातर लोग वैसे ही पहने हुए. Right? And they say, oh, new, different, the fashion. But if you look at pictures of Louis XIV, King of France, he was wearing those 300 years ago. 300. सब बोल रहे थे नया फैशन आ गया है, सब कुछ नया हो गया है. पर लेकिन अगर आप पुरानी तस्वीरें देखेंगे तो लुई जो राजा थे फ्रांस के 300 साल पहले वही पहन रहे थे. Nothing's new. कुछ भी नया नहीं. So don't try this thing, oh, it's all changed, we can't do this, we can't chant, we can't wear dhotis, we can't do anything, we should just, evaporate and then everyone will be happy. तो ऐसा मत सोचिए कि सब कुछ बदल गया है, अभी हम पहले तरह नहीं कर सकते, अभी हम जंप नहीं कर सकते, अभी हम धोती नहीं पहन सकते हैं, पहले की चीजें अभी काम नहीं करेंगे, इस तरह से मत सोचिए. It doesn't matter, whatever you do on the material platform, no one will like it. कोई अंतर नहीं पड़ता है, आप जो भी करेंगे भौतिक स्तर पे कोई भी उसको पसंद नहीं करेगा.
So just function on the spiritual platform, and those who are pious will appreciate it. Those who aren't, give them a few more years. तो आध्यात्मिक स्तर पे कार्य कीजिए, जो पुण्यात्मा है वो लोग उसको पसंद करेंगे, और जो पसंद नहीं करते हैं उनको थोड़ा और कुछ सालों का समय दीजिए. They keep hearing the Harinam party go by. After some years, then one day they'll go, who are these guys? तो रोज देखेंगे हरिनाम करते हुए भक्त लोग पास से निकल रहे हैं, कुछ समय के बाद में फिर वो पूछेंगे ये कौन लोग हैं? Right? Like that, it'll start. तो धीरे-धीरे ऐसे शुरू होगा. Like that. But don't stop the Sankirtan because, oh, the karmis don't like it. The karmis don't like anything. संकीर्तन को बंद मत कीजिए ये सोचकर कि कर्मी लोग उसको पसंद नहीं करते. कर्मी लोग कुछ भी पसंद नहीं करते. You understand? So what Lord Chaitanya, what the acharyas have given us, you do that. And those who appreciate, they will take it up. And those who don't, they won't take it up if you change it anyway. तो इसलिए जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने आचार्य ने दिया है उसको स्वीकार कीजिए, और जो लोग समझदार होंगे वो लोग उसको स्वीकार करेंगे, जो नहीं करेंगे वो वैसे भी कुछ स्वीकार नहीं करेंगे. Right? So the main point is that material things won't give any satisfaction, and only the holy name, that's the only thing that can give any benefit in this age of Kali. तो इसलिए मुख्य बात यह है कि कलयुग में भौतिक वस्तुओं से कोई भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, और पवित्र भगवान का नाम जो है वही एकमात्र है जिससे हमें संतुष्टि प्राप्त हो सकती है. Why age of Kali? Any age. और क्यों कलयुग में? किसी भी युग में. Right? Dhruva Maharaj is chanting mantra and meditating. ध्रुव महाराज भी मंत्र का जप कर रहे हैं और साथ में ध्यान कर रहे हैं. Here they're doing yajna and chanting mantras. यहाँ पे लोग यज्ञ कर रहे हैं और मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं. Dwapara Yuga, they're doing the deity worship and chanting mantras. द्वापर युग में वो लोग विग्रहों की सेवा कर रहे हैं और मंत्र का उच्चारण कर रहे And in Kali Yuga, you just chant mantras. हैं. और कलयुग में हम केवल मंत्र का उच्चारण करते हैं. So what mantra? Mahamantra. कौन सा मंत्र? महामंत्र. Yes? No? Jha. So I think time is up. You hit. No? Okay. Jha. Yeah? Srila Prabhupada ki, Samaveta Bhaktivinda ki, Jainatai Gaura Premanandi. Bhakti Vidyapurna Swami Maharaj. No, because I start the what do you call it? Yeah, and then you can't go outside. You go out in the sun.